Good evening and welcome. I'm Pooja Shali and today I bring you a special edition of India First from Srinagar, Kashmir and from this incredible Dal Lake, which even at night time looks as incredible as it does during the morning. The reason I'm here bringing you this special telecast is because Prime Minister Narendra Modi was on a visit to Kashmir, or as he called it, the Naya Kashmir. The speech of his rally was totally high on sentiment and on symbolism as well. So through the next half an hour, let's now bring you what Kashmir looked like today, what the people on the ground had to say. Let's begin. Prime Minister Modi in Naya Kashmir. Modi's big Badalta Kashmir message. ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। Naysayers fume, but Kashmir rises. जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। Prime Minister Modi's selfie with Nazim breaks internet. Modi's Mission Kashmir. Top focus on India First. This was Prime Minister Narendra Modi's first rally after 2015, and it was the first visit specifically after the announcement of the abrogation of Article 370. It was a big test, a big experiment. And today Prime Minister Modi mentioned the Badalta Hua Kashmir. He spoke of the promises that have been fulfilled, and then he also added about the promises that he's made for the next 5 years, assuring, as he said, growth and peace will come to the Kashmir Valley that has seen conflict for far too long. So here's a special report on all that Prime Minister said and all that was a part of the speech and the rally here in Srinagar. जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। Prime Minister Narendra Modi returning to Kashmir after nearly 5 years. And the valley has undergone a sea change since then. Article 370 is history, putting Kashmir on the road to full integration with India. On his first visit since the abrogation of Article 370, Prime Minister Modi said his government ended decades of bias. जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। The Prime Minister also trained guns on the Congress, National Conference and PDP for keeping Parivar before the welfare of the people of Jammu and Kashmir. परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एन.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी।
The Prime Minister also said there was an era when the people of Jammu and Kashmir were deprived of benefits, and now the valley is flourishing under Modi Sarkar. कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। In his first visit to Kashmir after Article 370 purge, Prime Minister Modi unveiled multiple development projects worth more than 6,400 crore rupees during the Viksit Bharat, Viksit Jammu Kashmir program at Srinagar's Bakshi Stadium. मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। With Pooja Shali in Srinagar, Bureau Report, India Today. Listen in now to also some other excerpts from Prime Minister Narendra Modi's speech in Kashmir and about the valley. ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं, इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा। So while the rally and the speech was at Bakshi Stadium, which has been newly renovated, what was the mood in other parts of Srinagar city? I went to the Lal Chowk. Now, Lal Chowk, remember, has seen far too worse of what Kashmir has been. It was once synonymous with hartal, shutdown, protests, and much worse. Today, I saw it renovated, bustling with tourists and young men and women as well. So what did the shopkeepers, the locals and the tourists had to say? Here's when I spoke to them at the Lal Chowk. Here at the Lal Chowk in Srinagar, Kashmir, there are winds of change. Lal Chowk has seen the good, bad, worse and ugly, and possibly again a hope of peace. Under the Smart City project, there have been changes that have been brought into one of the most prominent destinations for the locals and for the tourists. Now, you can see the changes that have happened. People taking a breather, sitting here with their loved ones, clicking selfies, clicking pictures. And right at this Lal Chowk, where there used to be protests and violence around it, lockdown or hartal or shutdown or a curfew-like situation, today reconstructed and renovated under that Smart City project. It has been inaugurated in 2023, but perhaps a reflection that there is a new Kashmir to look at, of hope, peace and change. And perhaps this reconstructed Lal Chowk will be able to witness only the good times here on. तो जैसे मतलब पहले डर लगता था, मतलब आने जाने में हालतें बहुत खराब होती थी।
आजकल जो मतलब माहौल जो है बहुत अच्छा है, मतलब किसी चीज का डर नहीं है, आराम से इंसान आता है, बैठता है, चले जाता है। कश्मीर में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? हम गुलमर्ग जाके आए, पहलगाम जाके आए। आज ये हमारा लोकल साइट सीन था, फिर मिनी स्विट्जरलैंड जो है बहुत बढ़िया जगह था। कश्मीर मनाली से बहुत अच्छा लगा हमें, बेटर लगा। टेंशन लगा यहाँ? नहीं, कोई टेंशन नहीं। शुरुआत में वो 2 दिन था, वो हाईवे बंद था, तो हमको उधर ही रुकना पड़ा 2 दिन। फिर इधर आके तो बहुत मजा है। वो स्नोफॉल हुई रास्ते में, गुलमर्ग में स्नोफॉल हुई, बहुत सारे स्नोफॉल हुए। फेज 2 भी ओपन था लकीली, तो हम उधर भी जाके फेज 1, फेज 2। Tell me now, you have seen Kashmir change, good, bad, worse, possibly better now. What do you have to say? Abhi kaisa mahal hai? I may say one thing, that we have seen 30 years turmoil in this Kashmir. We are brought up in this city center. I am the 3rd generation on this show. Wow. So now it is going better. I may say day by day it is going now better. And business is also booming up. I may say tourism business. बहुत चेंज आया है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हैं कि 80%, 90 में, 95 में इफेक्ट पड़ गया यहाँ पर साइकोलॉजी का दिमाग पे। हम we have seen many ups and downs in my life in Kashmir. क्योंकि मैं यहाँ लोकली रहता हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। बहुत हद से ज्यादा हालात खराबी देखे 90 में, बहुत अबतर हालात देखे, मौतें देखे, लाशें देखी, गोलियां देखी। Realize पहले जब कभी PM visit होते कुछ होते थे, there would be a shutdown, हड़ताल, internet not working. Today did you see that? Yes, ma'am. When any dignitary from India comes here, everything remains closed. Today, our honorable Prime Minister visited Kashmir. Everything was open. Everybody has seen, not only me. Bakshi Stadium was jam-packed. मैम, हम लोग यहाँ पर जो LOC का एरिया है, उरी का, बारामूला का, उन सब के अंदर जो यूथ है हमारी, जो बच्चे हैं स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको हम स्कूल किट्स बांटने जा रहे हैं, जिसके अंदर स्कूल बैग, नोटबुक, स्टेशनरी आइटम और एक छोटी पॉकेट बुक रहेगी, जिसके अंदर केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, वो सब के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर एक जनरली जो हमारी पहले विचारधारा देखा करते थे हम 370 से पहले, कि एक अलग देश की मांग की जाती थी और बोला जाता था हम इसका हिस्सा नहीं है, उसको ये दिखाना है कि आप लोग भी इसी का हिस्सा हैं, शेष भारत आपके साथ है। हम लोग हरियाणा से आए हैं, तो ये दिखाना है कि भाई हरियाणा आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है और आप देश का हिस्सा है और देश आपके बिल्कुल एक मित्र की तरह आपके साथ चल रहा है। Dal Lake boat ride is really very beautiful, and trust me, the people over here are so cooperative and so humble. It's really nice to visit in Kashmir at this season. And you know, when you take this shikara, you really feel that you are in the top of the world. I believe that why people really travel international. We all should in fact, like, you know, travel in our own India and get the money in our own country basically. And when you see the mountains here, when you see the ice, we did go to Gulmarg as well yesterday, and we had a real snowfall over there. My daughter, she's just 7.5 years old. She said, "Mama, my dream came true." And it's really... This is your first visit to Kashmir? It's my second visit, but then when 12 years prior, when I had come here with my parents, it was completely different. The safety and the security things were really little worrying. But now, the the scenario and everything is so natural and so, by mind, we are so relaxed that we don't even feel that we are in Kashmir. We feel that it's our own thing. It's our own city. It's our own... From terror to tourism, from Parivarvad politics to Vikas, that will be the hope for the Kashmir Valley here on. Interestingly, Prime Minister Modi did not just make political mentions with regard to opposition and his critics, but he also spoke individually to some of the young entrepreneurs, students, young Kashmiri men and women, and then he decided to, even on request of one of the young men, decided to click a selfie there in Srinagar at the rally. So here are some other snippets from what unfolded at the Bakshi Stadium and in Srinagar. A warm welcome awaits. Prime Minister Narendra Modi pays homage to the majestic and revered Shankaracharya Hill.
exploring the breathtaking beauty of Srinagar amidst the promise of a revitalized Kashmir. His first visit since the repeal of Article 370. Now, we don't see stone pelting, we don't see mass violence, and I'm glad to see that young boys and girls go to their schools, finish their education in town, which is natural or normal for you and I, was not normal for a Kashmiri child. I've seen Kashmir change for the better, and it means a lot. It means a lot to me because I never thought somebody will have the guts to do it. But my hope is that the peace will continue. A jubilant reception for the Prime Minister in the valley. हमारी खुशी जो मोदी साहब यहाँ आएंगे, यहाँ बहुत सारी मुल्क से आएंगे यहाँ लोग। आज हम मोदी जी को स्वागत करने लाया हूँ। मोदी जी ने हमारा देश बनाया है, पूरे वर्ल्ड में देश मोदी जी का नाम बड़ा नाम है। Launching 53 projects worth 6,400 crore rupees under the Viksit Bharat, Viksit Jammu Kashmir program. जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। As an advocate for the region's charm and rapid infrastructure development, the Prime Minister promoted Naya Kashmir as an ideal wedding destination. अब मेरा दूसरा मिशन है वेड इन इंडिया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। From young to old, Prime Minister Modi's visit sparked excitement among local Kashmiris. मेरा ड्रीम है कि मैं उनसे एक ऑटोग्राफ और सेल्फी लूं। फैन है आप उनके? यस, बहुत बड़ा फैन हूं मैं। जम्मू कश्मीर को अगर बदलने वाला है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। A tribute to diversity by the Prime Minister and warm wishes for the upcoming Ramzan and Shivratri. रमजान के महीने से हर किसी को शांति और सौहार्द का संदेश मिले, यही मेरी कामना है। ये भूमि तो आदि शंकराचार्य की तपोभूमि रही है और कल महाशिवरात्रि है। मैं आपको भी और सभी देशवासियों को भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। Adding a personal touch, fulfilling a young local entrepreneur's request for a selfie. Once troubled, now thriving with development, with its snow-capped Himalayan peaks, rushing rivers, historic gardens, and scenic alpine meadows, Naya Kashmir is already attracting tourists seeking respite from the hustle and bustle of the world. Bureau Report, India Today. So that was our special telecast on India First from Srinagar, and I've seen the valley in some of its worst days of the conflict, and I've seen it change with some hope for peace and prosperity. I hope that for the people of Kashmir there will be more opportunities, that they will be heard and involved in the new political initiatives by Prime Minister Modi and the government. And eventually, of course, it will be about the cooperation of the administration and the public, that they have to work together and ensure that Jammu and Kashmir becomes one of the greatest regions that the world will look at.
On that note, thank you for watching. Signing off with Sachin Chandok from Dal Lake in Kashmir.